3D printing technologies uses those CNCs with some modifications in that. We will go through all these systems, what modifications has been done in these 3D printers or in these machines with respect to the other CNC machines. So moving forward, what is 3D printing? So basically 3D printing is nothing but a process of converting a three-dimensional design which has been designed on a CAD software and convert it into a physical object through different procedures. So this procedure starts from designing the 3D object on a CAD software, then converting it to the acceptable format for the 3D printer, slice it down. Slice it down means convert it to the acceptable language or acceptable code which the printer accepts, and then send it to the printer and prepare your part or produce your part. For example, you can see here in the system the design is prepared, then it is sent to the 3D printer. The 3D printer acts, works, prepares the part, and finally the part is ready. So basically 3D printing is a method which brings a digital object or a digital 3D object or CAD representation into a physical form by adding layer by layer of materials. By adding layer by layer of materials, we will explore it out in the next few slides that how this layer by layer pouring of material can create a physical object. So 3D printing is the opposite of subtractive manufacturing and it is a part of the additive manufacturing. In this, as compared to subtractive manufacturing, where the material is cut down from a block of part and then a desired part or desired model is manufactured out or is prepared. Whereas it is opposite in the 3D printing or additive manufacturing where the part is being prepared by adding a layer by layer of material by melting of plastics or different type of other materials also. And this technology enables us to produce very complex shapes using less amount of material than different traditional manufacturing methods. So how it get evolved or what is the history of 3D printing? If we say 3D printing का जन्म 1980 में हुआ, where Mr. Charles Hull filed a first patent for a SLA type of 3D printer. There are different types of 3D printers also. We will come towards it in the next slide. And then moving forward towards the printer get first commercialized in 1988. Then the emergence of Carl Deckard appeared where he developed another type of 3D printing methodology which is called its SLS. And in 1992, the first FDM printer, which is the common used printer all over the world and highly used all over the world, it was patented and developed by Scott Crumb. And then he also patented inkjet and SLM type of 3D printers, where in 2005, the RepTap or the DIY printer, which we or various companies install in various educational institutions or in schools also for the teaching purposes. Those printers are called RepRap printers or DIY printers. And then in 2008,
the multi-jet type of 3D printer was launched, and it's the in 2009 the first yes in 2009 the first sale of RepRap DIY 3D printer occurred, while in 2012 there was a high reduction in the cost of commercially available 3D printers, where people can buy it and afford it easily and purchase it from the market easily. They can even install it in their household environment and can produce any type of parts. But the revolution occurred when in 2015 Mr. Joseph Prusa started research for good quality 3D printers, and he has written a PhD thesis on 3D printers in his institute. But it is the result of his thesis that a printer named after his surname, that is Prusa 3D printers, came into existence in 2016, and within a year the Prusa 3D printers got a highly sale of about 1 million 3D printers all across the world. It was the highest amount of commercially available 3D printer amount, that is 1 million, and it has been achieved like first all over the world. Moving towards the types of 3D printers commercially available and being used by different industries, different educational institutions, and different research personnels. So these 3D printing technologies are categorized in 6 different versions, whereas the 3 versions, that is the affordable and accessible one, are the material extrusion, where a material is being melted and is being poured layer by layer for preparing a particular type of object. Then there is wet polymerization, where different resins or different liquid materials are used to polymerize it or to make it solid by different rays of lasers or different beams. Then there is the third one, the powder bed fusion, where SLS, that is selective laser sintering, has been used, in which a powdery type of metallic materials are used for preparing a particular object. In material extrusion, the technology which is being used for the 3D printing is known as FDM or triple F, that is fused deposition modeling or free form fusion 3D printing. In wet polymerization, that is SLA, which means stereolithography, or DLP, that is direct light processing method of making object in 3D printing. Then there is other type of category in which exotic materials and metallic materials are being used for preparing a particular object, where material jetting, in which material is being prepared through material jetting DOD method, and then a binder jetting method, then a powder bed fusion metallic materials, where DMLS, that is direct metal laser sintering, SLM selective laser melting, EBM electronic beam melting. These type of methods and methodologies are being used for the 3D printing technologies all over the world. These are the basic different categories or 6 different categories or of 3D printing technologies, which is being widely used all over the world by different institutions. So how different 3D printing technologies works? Let's see by starting from the first one,
that is the fused deposition modeling, in short FDM. So these are the pictures of all the industrial type of 3D printers which are being used in the industries and in the institutions also. So fused deposition modeling or free form fabrication or free form modeling is the widely used or largely used or conventionally used 3D printers and easily available 3D printers all over the world, being used in a wide manner and can be installed at any place, even in the office, even in the household, even in the lab areas. It varies from the size of smaller 3D printers to very large, where a part of 2 by 2 meters 2 by 2 cubic meters can be prepared. So in this FDM 3D printing technology, there is a plastic filament. Here you can see the plastic filament reel. A plastic filament is being sent through an extruder motor through the nozzle, where it is being melted out in the nozzle and layered by layered or settled on a heated bed, where all these three parts, that is the bed, the extruder and the y-axis of the bed, can be moved in three-dimensional picture, that is the 3D coordinates. This whole part or the whole machine is controlled by a board which is connected through PCB, or some printers come with inbuilt micro processing unit where the whole systems can be controlled inside the 3D printer only. No PC is needed. Only the transfer of 3D object from the Sir, your voice is not coming. Yeah, Pankaj ji, your voice is not coming. आवाज नहीं आ रहा है पंकज जी. That's not audible, sir. Voice is not coming. Yeah, just wait. I think maybe some issue. Am I properly audible, sir? No. Yes, sir. Somebody Yeah, muted. Yes. किसी ने म्यूट कर दिया था. So where did I lost? So I was saying that I will repeat it again. मैं ये कह रहा था कि एक 3D प्रिंटर मशीन में एक प्लास्टिक फिलामेंट होता है जिसको कि हम लोग एक्सट्रूडर नोजल के थ्रू पास करके उसको गर्म करते हैं
एंड देन वो एक सर्टेन टेम्परेचर तक रीच करने के बाद वो मेल्ट हो जाता है एंड देन वो मेल्टेड प्लास्टिक मटेरियल हीटेड बेड के ऊपर उसको लेयर बाय लेयर सेटल करके एक 3D ऑब्जेक्ट प्रिपेयर होता है. You will get to understand properly after seeing the next video which we will be playing now. Fused deposition modeling, or FDM, is a layer additive manufacturing process that uses production-grade thermoplastic materials to produce both prototype and end-use parts. This technology is known to accurately produce feature details and has an excellent strength-to-weight ratio. FDM is ideal for concept models, functional prototypes, manufacturing aids, and low-volume end-use parts. The FDM process begins by slicing 3D CAD data into layers. The data is then transferred to a machine, which constructs the part layer by layer upon a build platform. Thin thread-like spools of thermoplastic and support material are used to create each cross-section of the part. Similar to a hot melt glue gun, uncoiled material is slowly extruded through dual heated nozzles. The extrusion nozzles precisely lay down both support and thermoplastic material upon the preceding layers. The extrusion nozzle continues to move in a horizontal XY plane while the build platform moves down, building the part layer by layer. The finished part is removed from the build platform and cleaned of its support material. Raw FDM parts have visible layer lines. However, service providers such as Solid Concepts offer multiple finishing options to create smooth, even surface parts including hand sanding, assembly, and cosmetic paint. Since FDM parts are constructed with production-grade thermoplastics, including ABS, polycarbonate, and Ultem, they are both functional and durable. FDM constructed with production-grade thermoplastics, including polycarbonate, functional and durable. They are both functional and durable. Grade thermoplastics, including ABS. Sir, your voice is not. Sir, your voice is not audible. Sir, mic is mute, sir. Yeah, someone is making me mute. So I was saying that we can see here that different materials of key rings are being used, where some wooden finished filament or plastic materials are being used for 3D printing, then glossy finish. Then these are some normal plastic materials which are readily available in the market. Polycarbonate and Ultem. They are both functional and durable. So we can achieve this level of finish, as you can see in the picture, that it is very glossy kind and very smooth finish on the object, which can be achieved through 3D printing. FDM is utilized in a number of industries, including air. Now we will have a look on a time lapse of a part built through FDM 3D printing.
टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने क्लासेस में मॉलिक्यूलर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं सीखने के लिए स्कूल्स में, और कई जगह पर ऑटोमोटिव पार्ट्स भी बिल्ड किया जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स अपने क्लासेस के लिए या लैब पर्पस के लिए बनाते हैं। सो आप देख सकते हैं इन वीडियोस में कि किन किन अलग अलग टाइप ऑफ मटेरियल्स या टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इस 3D प्रिंटर से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि जो कन्वेंशनल जो ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस थे उनमें कई सारी लिमिटेशंस थी ऑब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने का। बट जब से 3D प्रिंटिंग आया उस टाइम के बाद से किसी भी तरीके के पार्ट्स को या चीजों को बनाना बहुत ही इजी हो गया, कोई लिमिटेशन ही नहीं रहा वहां पर जब से 3D प्रिंटिंग आया है। देन हम लोग देखेंगे कि इस 3D प्रिंटिंग में दो तरीके की कोऑर्डिनेट्स यूज किए जाते हैं। एक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड वन इज द डेल्टा कोऑर्डिनेट। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट the bed or the machine moves in x, y and z direction, whereas in delta coordinate there is a mount in the center of a cylinder and it moves or rotates all over the area or the circumference of the cylinder and prepares the part. You will get a wider knowledge after seeing the next video. इसमें जो नोजल है वो दो डायरेक्शन में मूव करता है एंड जो बेड है वो आपको रोटेट करता है एंड प्लस द नोजल कैन गेट अप एंड डाउन आल्सो। So we have a freedom for the nozzle कैसे पहले पीता था तो कितना करो फिर जुआ के पी लेता था, बारात में तो डर बना रहता था ना पुलिस। ये बोर्ड हम लेके चले जाएंगे, हमको पढ़ाने में काम आएगा। ऑनलाइन क्लास। हाँ डेंटिस्ट ने एक टूथ का एलिमेंट बनाया था जो कि डेंटिस्ट्री के लिए यूज की जाती है।
technologies, we can create or we can develop where the resin hardens precisely where the laser hits the surface area. Once the layer is completed, the platform within the box drops down by a fraction or gets upwards in the z axis and the subsequent layer is traced out by the laser. और ये पूरा सिनेरियो, ये पूरा प्रोसेस कंटिन्यू होते रहता है जब तक कि डिजायर्ड ऑब्जेक्ट तैयार नहीं हो जाता. इस मेथड में जो प्रिंटर्स यूज होते हैं उनके बेसिक पार्ट्स, एक लेजर फोकसिंग डिवाइस होता है, एक स्कैनिंग मिरर होता है, देन एक लिक्विड फोटोपॉलीमर यानी कि लिक्विड मटेरियल्स या लिक्विड रेजिन्स होते हैं जिन पर की लेजर रेस को फोकस किया जाता है. देन एक स्वीपर होता है जहां पर कि उसको यूवी क्यूरिंग देता है या उस लिक्विड को एक सतह पर लाता है. या ये हमारा डेवलप्ड पार्ट हुआ एंड यहां पर एक स्क्रीन लगा होता है जो कि अटैच होता है हमारे एलिवेटर से. ये और क्लियर हो जाएगा जब हम अपना नेक्स्ट वीडियो देखेंगे. सेम एसएलए टेक्नोलॉजी की तरह ही डीएलपी टेक्नोलॉजी होता है. डिफरेंस यही होता है कि एसएलए में एलिवेटर या स्क्रीन ऊपर जाता है और जो बॉक्स है जिसमें लिक्विड रेजिन रखा रहता है वो स्टेशनरी रहता है. बट डीएलपी में क्या होता है, हमारा स्क्रीन और प्लेटफॉर्म कभी कभी मूव करता है, कभी कभी मूव नहीं करता है एंड जो लिक्विड रेजिन का टैंक है वो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में यानी कि दिस वे उसको मूव किया जाता है सो दैट कि हमारा डिजायर्ड ऑब्जेक्ट धीरे धीरे प्रिपेयर होते रहे. सेम प्रोसीजर इसमें भी है बट इसमें एक प्रोजेक्टर यूज होता है, उसमें स्कैनिंग मिरर रहता है. एसएलए में स्कैनिंग मिरर रहता है, डीएलपी में एक प्रोजेक्टर यूज किया जाता है लेजर को फोकस करने के लिए वाया ए लेंस, और उस लाइटिंग को हमारे रेजिन्स पर पोर करके हमारे ऑब्जेक्ट को रेडी किया जाता है. सारा प्रोसीजर सेम है एसएलए की तरह ही. डिफरेंस सिर्फ होता है कुछ रेजिन के मटेरियल्स में भी डिफरेंस होता है कि डीएलपी में कुछ रेजिन के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, एसएलए में कुछ रेजिन के मटेरियल्स अलग यूज किए जाते हैं. हालांकि एसएलए को आप कई तरीके के पार्ट्स को बनाने में यूज कर सकते हैं. डीएलपी को बेसिकली ज्वेलरी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या फैशन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, जिसमें इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस एक प्रिंटर है मेक 3D के द्वारा बनाया गया हुआ जिसका नाम है एका, EKA. अब हम लोग इस पर आधारित एक वीडियो देखेंगे जिससे हमको इस कॉन्सेप्ट या इस मशीन के प्रोसीजर का पूरा आइडिया लग पाएगा.
इस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ सबसे बड़ा फीचर क्या है कि हमें इस टेक्नोलॉजी से सबसे स्मूथ फिनिश का ऑब्जेक्ट बनकर मिलता है। Stereolithography is a rapid prototyping process used to create parts from 3D CAD data in a matter of hours. SLA is a highly accurate additive manufacturing process and may also be referred to as rapid prototyping or 3D printing. Models created with this technology are typically used as concept models for form and fit studies or as master patterns for molding techniques. The SLA process begins when CAD data is sliced into thin cross-sections or layers, typically about 6/1000 of an inch thick. This data is then transferred to an SLA additive manufacturing system containing a vat of UV curing and professional paint options available through service providers such as Solid Concepts. Stereolithography has become an excellent economic choice for rapid appearance models. A wide variety of industries have embraced SLA, including medical, automotive, entertainment. Now we will move towards the next technology, that is the powder bed fusion methodology of additive manufacturing or 3D printing, that is selective laser sintering. Selective laser sintering का मतलब होता है कि इस मशीन्स में एक बेड है जिसके ऊपर हम लोग पाउडर्स को पोर करते हैं। उन पाउडर्स के ऊपर लेजर को फोकस किया जाता है एंड जहां जहां लेजर फोकस करेगा या पास करेगा वहां का पाउडर जो है वो मेल्ट होकर के ऑब्जेक्ट का फॉर्म ले लेगा, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टेक्नोलॉजी में अलग अलग टाइप ऑफ मशीन्स भी होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, बट एक लिमिटेशन है इस टेक्नोलॉजी का कि ये बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी है, काफी कॉस्टली होती है, इसके मशीन्स भी काफी कॉस्टली आते हैं। इस टेक्नोलॉजी के मशीन्स में जो बेसिक पार्ट्स हैं वो होते हैं, 2 चेंबर बना होता है। एक चेंबर में हम लोग पाउडर फिल करते हैं, दूसरे चेंबर में हमारा पाउडर जो है यहां से मूव करके इसमें ड्रॉप डाउन होता है एंड फिर जैसे ही ड्रॉप डाउन हुआ वहां पर लेजर फोकस करके पाउडर को मेल्ट करता है एंड मेल्ट करके ऑब्जेक्ट का फॉर्म दे देता है, ऑब्जेक्ट के शेप में रेडी कर देता है। और इस पूरे चेंबर को हम लोग आर्गन गैस फिल करके इसको क्लोज कर देते हैं सो दैट कि जो हमारा लेजर से जो पाउडर मेल्ट हो रहा है वो परफेक्टली फिनिश के साथ बने। अदरवाइज अगर हम लोग गैसियस फॉर्म में नहीं देंगे तो वो एक एज अ कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करेगा, वो ऑक्सीजन या किसी चीज के साथ ऑक्सीडाइज होकर के कुछ पार्ट्स में क्या कहते हैं लिमिटेशंस या कुछ इम्प्योरिटीज क्रिएट कर देगा। तो यहां पर होता क्या है कि जैसे जैसे लेयर बाय लेयर पाउडर को शिफ्ट किया जाता है रिकोटर के थ्रू, लेजर रेस फोकस करती हैं, ऑब्जेक्ट रेडी होता है, ये फैब्रिकेशन पिस्टन जो है नीचे आ जाता है एक लेयर एंड देन पाउडर को इस पिस्टन के थ्रू पुश करके रिकोटर के थ्रू इसमें वापस सेंड कर दिया जाता है। तो होता क्या है इस टेक्नोलॉजी में, अ लेयर इज ट्रेस्ड अक्रॉस अ पाउडर बेड ऑफ tightly compacted powder material according to the 3D data to the machine in the XY axis. As the layer interacts with the surface of the powdered material, it sinters या वो fuse हो जाता है। The particles fuses with each other forming a solid. As each layer, जैसे जैसे एक लेयर कंप्लीट हो जाता है पाउडर बेड धीरे धीरे नीचे चले जाएगा एंड जो रोलर होता है वो पाउडर को फिर स्मूथ सरफेस में कन्वर्ट कर देगा, पाउडर एरिया से लेकर के
वहां पर शिफ्ट कर देता है एंड वो उस सरफेस के ऊपर प्रॉपरली लेयर कर देगा एंड वो नेक्स्ट पास के लिए रेडी हो जाता है। ऐसे करके लेयर बाय लेयर ऐसे प्रिपेयर होता है एंड देन हमारा फाइनल ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है। Selective laser sintering, or SLS, is a rapid prototyping technology that turns 3D CAD data into physical parts in a matter of hours. Selective laser sintering, or SLS, is a rapid prototyping technology that turns 3D CAD data into physical parts in a matter of hours. SLS is an additive manufacturing technology that uses powdered nylon 11, nylon 12, and PEEK materials. Parts produced are lightweight, highly durable, and both heat and chemical resistant, making SLS an excellent choice for producing production parts without the expense of tooling. The SLS process begins by splitting 3D CAD data into thin cross-sections or layers. यहाँ पर जो 3D प्रिंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें इसी तरीके से जो है पार्ट्स को कई सारे लेयर्स में डिवाइड कर देता है। जो हमने 3D डिजाइन बनाया उसको हमने 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर पे डाला। 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर इसको स्लैश डाउन करता है। स्लैश डाउन यानी कि पूरे पार्ट को लेयर बाय लेयर कट कर देता है। अगर हम एक क्यूब को अज्यूम करें, उस क्यूब को अगर 1000 पार्ट्स या 100 पार्ट्स में अगर कट डाउन कर देंगे तो वो थिन पेपर के साइज में प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर हम 100-150 पेपर को या 200 पेपर को अगर एक बेड पर अच्छे से अरेंज करके रखे तो वो क्यूबॉइडल का फॉर्म ले लेता है। सेम उसी तरह सारे पार्ट्स को 3D प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर स्लाइस डाउन करते हैं लेयर बाय लेयर एंड देन वो उस प्रिंटर में फेड हो जाता है, यानी उस प्रिंटर में उसको डाला जाता है। देन प्रिंटर उसी तरीके से सारे पार्ट्स को एक लेयर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा एंड सो ऑन उसको प्रिपेयर करता है। Into thin cross-sections or layers. The data is then transferred to the SLS additive manufacturing equipment. The machine then begins to create the first layer. After a leveling roller spreads a thin layer of powdered material यहाँ पर across फिर the उसके powder बाद bed, रोलर CO2 laser traces पाउडर the को वापस cross-section से of the material. उसके ऊपर pour कर देता है, As the laser scans the surface, स्मूथ कर देता है, material is then heated फिर से and fused together. लेजर स्कैन करके पाउडर को सॉलिडिफाई करता है। Once a single layer is complete, the powder bed is lowered to make room for the next layer. More material is introduced from the powder cartridge and rolled out smooth, while unused material is recycled. The process is repeated, building layer upon layer until the part is complete. As SLS parts are built, they are encompassed by unsintered powder, which provides supplemental strength and eliminates the need for support structures. Complex designs and assemblies, once thought impossible, are now being redesigned with SLS as cost-effective integrated structures. Solid Concepts manufactures parts utilizing nylon with property and इस प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में सिर्फ एक डिमेरिट है कि जब भी हमारा ऑब्जेक्ट रेडी हो जाता है तो हमें उसको किसी ब्रश के थ्रू या किसी मटेरियल के थ्रू, किसी क्लीनिंग आइटम के थ्रू उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है, सारे पाउडर्स को हटाना पड़ता है एंड देन उसको वॉश करना पड़ता है, तभी जाकर के हमें बहुत ही स्मूथ फिनिश मिलेगा। बट इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग मेटालिक ऑब्जेक्ट और नायलॉन के मटेरियल्स बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। enhancing fillers to create rugged SLS parts suitable for a variety of prototype and production applications. Typical uses for SLS include tools and fixtures, fuel tanks, flight-rated components for unmanned aerial vehicles, automotive designs, air ducts, architectural models, and artistic sculptures. अब जो ये वीडियो दिख रहा है Centerit, simplicity of ये professional वर्ल्ड का 3D सबसे printing. छोटा SLS 3D प्रिंटर है जिससे कि मेटालिक एंड नायलॉन के मटेरियल्स प्रिंट किए जा सकते हैं।
यहाँ पर एक चेम्बर में हम पाउडर को पोर कर रहे हैं, दूसरे चेम्बर से पाउडर हमारा बेड पर जो है शिफ्ट हो जाता है सोलर के थ्रू। जो अगली टेक्नोलॉजी अब हम लोग देखेंगे वो है मटेरियल जेटिंग, जो कि एक जेटिंग टाइप ऑफ 3D प्रिंटर्स का एक कैटेगराइज वर्जन है। ये भी टेक्नोलॉजी काफी कॉस्टली टेक्नोलॉजी होती है, बट the advantage which we get through this type of technology is we can prepare a smooth finish, a highly surface finish or good surface finish objects at a very high rate. बाकी सब machines में और इन सब technologies में क्या difference है कि with jetting technologies we can prepare the objects very fast as compared to FDM, SLA, DLP and SLS. In this technology, there is a heated bed on which a liquid or ink is poured on the bed in the shape of the object which we want to prepare, and time by time, layer by layer, it is being created. So with this 3D printing process, there is a selectively jetted liquid materials which is being poured through multiple jet heads. Simultaneously, jetting supporting materials are also there to support the other parts of the object, and then these liquid materials get polymerized by heating of the bed, which is then cured by passing a UV light over it. Through passing UV light, the finish gets smooth and the polymers or the liquid polymers get binded with the consecutive layers or the adjacent layers of the object. Now we will see that how this type of technology works in the next video, and then comes the binder jetting. In material jetting, there is liquid material which is being poured. In binder jetting, the liquid material is binded with each other with the help of a powder, like it is being done in the SLS. Here in material jetting, there is a binder and is selectively sprayed into a powder bed of the part material to fuse it into a layer at a time to create or print the required part. As we can see in other powder bed systems, एक बार लेयर कंप्लीट होने के बाद द पाउडर बेड ड्रॉप्स डाउन इंक्रीमेंटली और रोलर जो है उसके ऊपर आकर के पाउडर को स्मूथ कर देता है सरफेस के ऊपर, एंड हर पास के बाद वो जेट हेड्स से सारे लिक्विड्स जेट के स्प्रेस के थ्रू बेड के ऊपर पोर किए जाते हैं, देन अगेन पाउडर को सब्सिक्वेंट लेयर के लिए लेवल किया जाता है एंड उसके ऊपर
डाला जाता है, सो दैट कि बाइंडिंग जो है परफेक्ट हो जाए। इस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग मेटालिक ऑब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड मटेरियल जेटिंग के थ्रू हम लोग प्लास्टिक या लिक्विड रेजिन्स के मटेरियल्स हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ वी विल सी a video through which we can get the idea of material jetting and binder jetting processes. PolyJet is a layer additive manufacturing technology used to develop plastic prototypes from 3D CAD data. This rapid prototyping process uses inkjet technology combined with UV curable materials to quickly and economically produce highly detailed and accurate physical prototypes. PolyJet is one of the fastest As you can see, processes available. Develop high layer by performance layer, parts, a UV and curing ideal is for done smaller parts, so that the appearance material models, gets and binded master with patterns. each layer. The PolyJet process begins by slicing CAD data into cross sections or layers as thin as 6 Again, 10,000 इसमें of भी an inch. सारे पार्ट्स को स्लाइस डाउन किया जाता है, एक पर्टिकुलर 100 नंबर ऑफ पार्ट्स और 1000 नंबर ऑफ पार्ट्स। The data is then And then transferred उसको to the PolyJet मशीन के अंदर which डाला begins जाता है, constructing the object one जहाँ layer पर at a time. इंक्स फील्ड होते हैं बॉटल्स में। इंक्स जो है इन नोजल्स के थ्रू बेड पर ट्रांसफर होता है। Similar to how an inkjet printer lays down pigment, यहाँ पर a बहुत सारे PolyJet नोजल्स बने हुए printhead हैं, deposits जैसा small जैसा हम लोग amounts of डिजाइन देंगे ultraviolet curable डिजाइन के material on अकॉर्डिंग the ये build नोजल्स अपने platform, आप सेट हो जाते eventually हैं forming a एंड single वो cross section बेड of the के ऊपर part. लिक्विड्स को An ultraviolet light attached to the printhead simultaneously cures the material as it is printed. Once a cross section is complete, the build platform is lowered slightly to make room for the next layer. As the part is built, support material is added to give supplemental strength to fine structures and down-facing surfaces. After all of the layers have been created, the finished part is removed from the platform and cleaned. Although finishing is not necessary, a number of hand sanding and paint options are available through service providers such as Solid Concepts. PolyJet parts are well suited for quick, economical prototypes requiring exceptional detail, surface finish, and edge visualization. PolyJet is ideal for a wide range of industries, including medical, entertainment, consumer products, automotive, and industrial design. Now moving towards powder bed fusion technology, or the category of powder bed fusion, in which I have shown you the 3 different types of machines, which are DMLS, SLM, and EBM type of machines are there, in which we can prepare metallic objects very easily and very accurately, and also very in a fast manner. So in DMLS 3D printing, there is a computer numeric controlled system where a high laser beam is used to melt and fuse the layers of metallic powder together. It is an industrial 3D printing process where fully functional रैपिड मेटल प्रोटोटाइप्स एंड प्रोडक्शन पार्ट्स बहुत ही जल्दी इससे प्रिपेयर किए जा सकते हैं। इसमें भी एसएलएस की तरह ही ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। एसएलएस में कलेक्टर प्लेटफॉर्म नहीं होता है, डीएमएलएस में कलेक्टर प्लेटफॉर्म होता है। एसएलएस में हम लोग नाइलॉन और प्लास्टिक टाइप के ऑब्जेक्ट्स, हार्ड प्लास्टिक टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। Whereas in direct metal laser sintering, we can prepare any type of metallic objects. In these machines also, there is a dispenser platform from where the metal powder is poured on the building platform, where the laser is scanned across all the area for the desired part to get the desired part. And as soon as the laser strikes on the powder gets melt down and binds with each other or fuses with the layers of the metallic powder and prepares the desired part. As soon as a layer is completed,
The recoater or the roller blade sweeps the powder again on the top of this building platform, settles it down, and the next layer process carries on. The extra or the non-used powder or extra powders are being collected on the third platform, where it is the collector platform, and it gets dispensed off. Here in this image you can see how the laser beam is focused and a metallic object is being prepared. We can get a wide idea through the next video. Direct metal laser sintering, also known as DMLS, is an additive manufacturing technology that creates metal parts directly from 3D CAD data without the need for tooling. DMLS utilizes a variety of metal and alloy material tooling. यहाँ आपको दिख रहा होगा कि कैसे लेजर को बेड के ऊपर फोकस किया जा रहा है, एंड एक एक पाउडर के पास से जब लेजर स्कैन हो रही है तो यहाँ पर रेज निकल रहे हैं, या तो कहें चिंगारी निकल रही है. ये चिंगारी इसलिए निकल रही है बिकॉज द पाउडर्स are being melted down or being fused with each of the adjacent layers or each of the adjacent powder materials. एंड जब ये पाउडर मटेरियल्स फ्यूज हो जाते हैं तो एक मेटालिक ऑब्जेक्ट बन के तैयार होता है. मार्केट में बहुत सारे मेटालिक पाउडर्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, आयरन के, माइल्ड स्टील के, एल्यूमिनियम के भी, टाइटेनियम के भी हैं. इन सारे मटेरियल्स के पाउडर को पोर किया जाता है एंड देन लेजर बीम के थ्रू उसको प्रिपेयर किया जाता है ऑब्जेक्ट को. Directly from 3D CAD data without the need for tooling. DMLS utilizes a variety of metal and alloy materials such as stainless steel, cobalt chrome, and Inconel to create strong, durable parts and prototypes. DMLS is an excellent choice for functional metal prototypes, high-temperature applications, and end-use parts. The DMLS process begins in the same fashion as other layer additive manufacturing technologies. A program takes 3D CAD data and mathematically slices it into 2D cross-sections. Each of these sections will act as a blueprint, telling the DMLS machine exactly where to sinter the metal material. The data is then transferred to the DMLS equipment. A recoater assembly pushes powdered metal material from the powder supply to create a uniform layer over the base plate. A laser then draws a So 2D here you cross-section can on the see that surface of how the the building laser material, is being heating and fusing the scanned material. all over the powdered materials and it is being fused. Once a single layer is complete, the base plate is lowered just enough to make room for the next layer. More material is raised from the cartridge and recoated evenly upon the previously sintered layer. The DMLS machine continues to sinter layer upon layer, building from the bottom up. As the part is built, support structures are added to give supplemental strength to fine features and जब part overhanging prepare हो जाता है surfaces. तो सेम SLS की The तरह ही completed part is then इसको removed powder from से the base remove plate किया जाता है, and treated with an clean age-hardening किया heat जाता है, process इसको to wash further harden the करके part. Any part support हमारा structures are also removed at this time. With surface treatment and options available through service parts can be used in highly cosmetic DMLS का applications. मैक्सिमम Typical एप्लीकेशन use हमारा इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल पार्ट्स या इंडस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए. In all the powder bed fusion systems, that is DMLS, EBM and SLM, every machines work on the same principle. There is a ray, there is powder, and the powder melts down and prepares the part. In electron beam melting also, the same procedure is applied. It was first developed by Arcam EBM, which is an subsidiary company of General Electric, that is GE. And उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया अपने एरोस्पेस पार्ट्स को अपने
विंडमिल के पार्ट्स को, इंजन के पार्ट्स को बनाने के लिए, उनका प्रोटोटाइपिंग करने के लिए और काफी शॉर्ट टाइम पर उनका प्रोडक्शन करने के लिए। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले जो है पार्ट्स, जो भी एरोस्पेस के पार्ट्स होते थे, उनको मैन्युफैक्चर करने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए काफी टाइम वेस्टेज होता था और काफी अलग अलग डिफरेंट सब्सिडियरी पार्ट्स भी बनाना पड़ता था, जैसे मोल्ड्स हो गया या अलग अलग मशीन्स हो गए, टूल्स हो गए, उनको प्रिपेयर करना पड़ता था सो दैट कि उनके विंग्स या जो टरबाइन के पार्ट्स हैं वो बनाया जा सके। बट विद द हेल्प ऑफ EBM technology or with the help of DMLS technology, these parts, these turbines, wings, जिनमें की काफी एरोडायनामिक शेप होता है, उनको प्रिपेयर करना काफी इजी हो गया इन टेक्नोलॉजीज के आने के बाद, और काफी लेस अमाउंट ऑफ टाइम में, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट वेस्टिंग एनी मटेरियल, विदाउट वेस्टिंग एनी मैन पावर, these parts can be prepared very easily in very shorter span of time. So EBM is also a part of the powder bed fusion family. Unlike the laser powder bed fusion, it uses an electron beam to fuse the metal particles or metal powders layer by layer to create the desired part. इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक होता है, जो कि है हीट सोर्स। EBM में इलेक्ट्रॉन यूज होता है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन गन से प्रिपेयर किया जाता है। बाकी सब में लेजर गन होता है, उसको एक प्रोजेक्शन के थ्रू या एक स्कैनिंग एलिमेंट के थ्रू प्रोजेक्ट किया जाता है बेड के ऊपर, पाउडर बेड के ऊपर। नाउ वी विल सी दैट हाउ दिस EBM टेक्नोलॉजी वर्क्स। Additive manufacturing offers greater freedom in design and allows for the creation of optimized parts that are not constrained by the limits of traditional manufacturing. Arcam EBM has the unique ability to tightly stack parts within the build in order to increase productivity. An optimized build file is sliced and loaded into the Arcam EBM system. Following this, metal powder is loaded into the machine. The build chamber is then closed and a vacuum is created to ensure a clean, controlled environment that allows for the processing of reactive material. Next, Arcam EBM's powder layering system evenly distributes a thin layer of powder on the build area. A powerful 6 kilowatt electron beam heats the powder bed to the optimal ambient temperature and then proceeds to melt the powder. First, contour melting and then hatch melting. The electron beam unit generating the beam contains no moving parts, allowing for extremely fast and accurate beam control. The build environment is kept hot, reaching temperatures exceeding 1000 degrees Celsius, resulting in no residual stresses and allowing for the processing of crack-prone materials. As each layer is completed, the build is lowered and a fresh layer of build powder is raked over it. This process repeats, growing the build one layer at a time. When the build is complete, the tank is extracted and the Arcam EBM machine is prepared for the next build. So here you have seen that how the electron beam rays have been focused on the powder bed to melt the metal powders and prepare the desired